हाल ही की हिंदी स्पीकिंग है, इतना सुंदर हिंदी बोल रहे थे, हिंदी में काम किया। और आप लोग आश्चर्य करेंगे ये हिंदी कैसी है और क्यों है। मैं इसलिए कि सिनेमा का अगर गुणगान नहीं करूंगा यहां आकर के तो फिर क्या करूंगा। मैं अभी 2-3 साल पहले दिल्ली के एयरपोर्ट पे था, लाउंज में घुसा मैं, तो वहां एक महिला बैठी थी साड़ी पहने हुए। तो हमारे वहां के डायरेक्टर जो अधिकारी थे उन्होंने मुझे कहा, साहब ये बांग्लादेश के मंत्री हैं और ये जो हमारा लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट है एडमिनिस्ट्रेटर्स का मसूरी में, उसमें भाषण देने आई थी। उस भी मेरा उन्होंने परिचय करा कि एक्स चीफ मिनिस्टर है और नाउ इट इज मेंबर पार्लियामेंट। तो मैंने उनसे पूछा ऐसे ही, मुझे दादा बहुत ज़्यादा बंगाली नहीं आती है पर थोड़ा सा 2-4 शब्द आते हैं। तो मैंने कहा, दीदी आपने हिंदी बुझवेन? मैंने, दीदी आप क्या हिंदी जानते हैं? तो एकदम बोली, अरे हिंदी क्यों नहीं जानते, हम सब बांग्लादेशी तो हिंदी सिनेमा देखते हैं। Now you can imagine कि अभी जब हमारे द ग्रेट अमिताभ बच्चन बोल रहे थे तो मुझे लगा कि चूंकि इट इज ए इंटरनेशनल फेस्टिवल एंड अमिताभ विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश ओनली, परंतु वो तो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोले। यानी क्या कमाल है, क्या कमाल है। मुझे लगता है बांग्लादेश का आजादी का 50वां वर्ष है और इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हिंदुस्तान में ये भी 50वां और 51 ईयर है, लगभग समान है। तो कम से कम दादा नहीं तो हमारा सुप्रियो तो कुछ कोशिश करेगा कि आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर ए डिकेड ऐसा लगने लगे कि देश दो है, देश हमारे दो हैं, परंतु हम दोनों की आत्मा एक है। अगर आपका फिल्म कुछ ऐसा दिखा देगा तो मैं सोचता हूं कि विल क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड एंड दैट यू कैन डू। यू आर द क्रिएटर्स, आई एम नॉट ए क्रिएटर, आई एम सिंपली स्पीक, आई गो एंड कीप स्पीचेस, नथिंग मोर देन दैट। तो एक प्रकार से ये जो हमारा ताकत है, इस ताकत को इस सिनेमा ने, और आप आश्चर्य करेंगे जब मैं नेपाल जाता हूं तो नहीं कोई नेपाली ऐसा नहीं है कि जो हिंदी नहीं जानता है। आई सरप्राइज, क्या है? बोले साहब हम सिनेमा तो सब हिंदी देखते हैं। और ये मॉरिशस और ये सब देशों के तो बात ही छोड़िए, वहां तो वैसे बहुत देखते हैं हिंदी लोग। तो एक प्रकार से जो हमारा सिनेमा है ये कैसे इट इज यूनाइटिंग आवर कंट्री and it is not only uniting our India but probably it is uniting all the neighboring countries also, सारे पड़ोसी देशों को भी एक कर रहा है। तो मैं इसलिए भारतीय सिनेमा को अपना प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और छोटे छोटे बच्चे जितने उत्साह के साथ काम कर रहे थे उन बच्चों को आज मैं अगर यहां नहीं आता प्रमोद जी तो मैं कहा, मैं तो रूखा सूखा सूफी आदमी। दादा आपने बुझबेन सूफी, अरे नो इंटरेस्ट इन साहित्य कला एंड संगीत है, ऐसा सूखा आदमी देख करके मुझे लगा कि बुढ़ापे में क्या मुझे भी बचपन में तो कुछ आता ही होगा ऐसा। तो एक प्रकार से ये जो अवसर होते हैं ऐसे जो फिल्म फेस्टिवल है, एनी फेस्टिवल, ये कुछ न कुछ शो करते हैं, कुछ न कुछ सिखाते हैं। और इस फेस्टिवल के माध्यम से, इंटरनेशनल फेस्टिवल के माध्यम से दो चीजें हैं, एक तो ये कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं और एक ये कि भाई हम सीमित नहीं है, हम पूरे विश्व के एक हैं। सारा विश्व इन वन रेस्पेक्ट और द अदर, द होल वर्ल्ड इज वन। वी मे हैव गॉट अवर ओन डिफरेंसेस, हो सकता है डिफरेंसेस हो सकते हैं, परंतु अभी हार्ट की बात शायद सुप्रियो कह रहे थे, हृदय की बात बोल रहे थे। ये हृदय ऐसा है, ये हृदय हिंदुस्तान के व्यक्ति का जैसा होगा, कहीं न कहीं वो बिल्कुल अफ्रीका का आदमी होगा तो उसके हृदय में भी कहीं न कहीं वो समानता होती है, कहीं न कहीं अमेरिका के व्यक्ति में वो समानता होती है। इसलिए जब कभी कोविड जैसे संकट आते हैं तो फिर सारी दुनिया सोचती है कि भाई हम अमेरिका की ओर देखें कि भारत की ओर देखें। और आज देखें कि सारा देश, समाज, दुनिया हमारी ओर देख रही है। इसके पीछे का एक ही कारण है, ये जो हार्ट की बात अभी सुप्रियो ने कही। और सचमुच सिनेमा जो है
It doesn't touches mind. It touches only heart. It comes only from the heart. The kala, the art comes from the heart, not from the mind. मस्तिष्क से और चीजें आ जाती हैं, एटम बम आ सकता है और पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ सकती है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये हार्ट से आती हैं, हृदय से आती हैं। और सौभाग्य से हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश इतना हृदय प्रधान है। इस हृदय देश के अंदर कहीं जाइए, हमारे आजकल महाराष्ट्र में हो, बड़ी सुंदर इतना साहित्य दिखाई देता मुझे। कभी लगता है कि भगत सिंह शुड यू गेट अनदर वर्थ, ताकि तुम मराठी भी सीख सको ठीक से, इतना सुंदर दिखते हैं। और बंगला का तो हम सब लोग रविन्द्रनाथ टैगोर से शरदचंद्र से लेकर किसने को लोग पढ़ते रहते हैं। और मैं सोचता हूँ कि चाहे जनगण मन हो, चाहे वंदे मातरम हो, वो तो हम सबके हृदय में, दिमाग में, मस्तिष्क में छाया हुआ रहता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हम सब लोगों को यूनाइट करने वाले, कला जो है, साहित्य जो है, संगीत है, ये मनुष्य को एक करता है। और आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि आप सब जो इसमें भाग लेते हो। जीनत जी, मैं आप लोगों को चाहूंगा बहुत जुग जुग तक जियो आप लोग, और एक प्रकार से हमारे समाज का मार्गदर्शन करो, क्योंकि ये जो है क्रिएटिव वर्ल्ड है। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में तो गाली देते रहते हैं, एक दूसरे को विरोधी करते रहते हैं। क्यों भाई, विपक्ष का नेता ही होता है हर विधानसभा में, हर लोकसभा में। आपके यहाँ भी वो क्या एक्टर होते हैं, एक हीरो और दूसरा क्या कहलाता है, विलेन। आपके यहाँ भी होता है, पर अल्टीमेटली विजय आपके यहाँ भी हीरो की होती है, विलेन की नहीं होती है। तो इसलिए हम सब लोग कुछ इस प्रकार से साहित्य और संगीत के माध्यम से हम समाज को आगे बढ़ा सके। रविन्द्रनाथ टैगोर के उस सत्यम शिवम सुंदरम का जो उन्होंने उद्घोष किया है, उस सत्यम शिवम सुंदरम का हम भारत में और भारत के बाहर भी हम उसका एक प्रकार से प्रत्यक्ष उसका दर्शन करवा सकें। तो मैं सोचता हूं कि आप सबका बड़ा योगदान होगा। आप सब लोगों ने मेरे जैसे, जिसने कहा, जिसको मैंने कहा कि 62 के बाद जिसने कोई मूवी ही नहीं देखी हो, क्योंकि उसका कारण क्या है कि आई ऑलवेज गो ऑन मूविंग। ये रवि यहाँ पर है, मुझे प्रधानमंत्री ने पिछली बार जब 2014 में आए तो सारे एमपीज को कहा बी डिजिटल, बी डिजिटल, बी डिजिटल। तो मैंने बाहर आके एमपी से कहा, देखो भाई आप तो नए जमाने को, यू शुड बी डिजिटल, बट पर्सन लाइक मी, ओल्ड एज लाइक दादा, मैंने कहा वी आर ओनली डिजिटल, डिजिटल वी विजिट है। तो एक प्रकार से ये जो विजिटिंग है, एक दूसरे के पास जाएं, मिलें, एक दूसरे की कला को सीखें, एक दूसरे की भाषा को सीखें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। क्या सुंदर है। हमारे महाराष्ट्र में कुछ राजनेता जब बोलते हैं मराठी, मैंने कहा तुम बहुत अच्छा बोलते हो, मैं सबको भी बोलता मराठी बोलो, सीखो, आग्रह पूर्वक करता हूं। इन एवरी यूनिवर्सिटी आई हैव सेड दैट आई वोंट लाइक एनी यूनिवर्सिटी टू बी कंडक्टिंग एनी मीटिंग इन इंग्लिश। मैंने कहा आप क्यों नहीं मराठी में बोलते हो? नाउ दे ऑल कंडक्ट इन मराठी। मैंने कहा नहीं करते, बोलो ना, है ये स्वाभिमान खड़ा होता है। आज ऐसे हमारे किस प्रकार से एकता पैदा कर रखी है हिंदी सिनेमा ने, हमारे दादा बोल रहे थे। तो वास्तव में मैं ये बात, मैं हमेशा इसी बात को बोलता हूं। और ये हमारा सिनेमा निश्चित रूप से सारे रीजनल, सारे नेशनल जितनी भी है, ये देश को एक करके, और इस देश को हम सब लोग थ्रू आवर कला, थ्रू आवर म्यूजिक, आर्ट्स एंड म्यूजिक, कला और संगीत और साहित्य, इसके माध्यम से हम इस देश को, जैसे साहित्य में नोबेल प्राइज प्राप्त किया ना उस अंग्रेजों के जमाने में, ऐसे ही साहित्य, संगीत और कला के माध्यम से हम सबसे फिर से नोबेल प्राइज प्राप्त करें, उसमें आगे रहें। आप सब लोगों को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विशेष करके सारे हमारे इसकी फिल्म के आयोजकों को और अपने यहाँ के मुख्यमंत्री को और उनके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। Thank you so much for your kind words. This year, IFFI presented a few new avenues for all cinema lovers. Besides the 51st IFFI incorporating OTT for the first time, the Indian Panorama section had a great collection of regional cinema as well. Indian cinema से जुड़े एक ऐसे शख्स से आप सभी का परिचय कराना चाहूंगी, जिन्हें वैसे तो परिचय की कोई जरूरत नहीं है। He is an actor, a politician, and a famous personality. He is a member of parliament from Gorakhpur, UP.
शुरुआत भोजपुरी सिनेमा से की, लेकिन इनकी कला ने भाषाओं की बंदिशों को तोड़ा। आज हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और भोजपुरी में कुल 650 फिल्मों में काम कर चुके रवि किशन को उनके अमूल्य योगदान के लिए इफी उन्हें सम्मानित करना चाहता है। May I request the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Amit Khare, and Chief Secretary of Goa, Shri Parimal Rai, to felicitate our guest of honor, Shri Ravi Kishan, actor and Member of Parliament. Please welcome Shri Ravi Kishan on stage and the dignitaries as well with a round of applause. Sir, we'd like you to remain on stage and we'd be delighted to hear from you. Please. Yeah. And thank you to our dignitaries. Good evening, ladies and gentlemen. Honorable Governor साहब ने इतना सुंदर कहा कि निशब्द हो गया मैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं। हमारे पार्लियामेंट में और हमारे केंद्र में मंत्री और सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ एक बहुत ईमानदार व्यक्तित्व जो इस वक्त कोलकाता में छाए हुए हैं और बंगाल का चुनाव जिताने में और 200 से ज्यादा सीट लाने के लिए आपको अभी से मैं धन्यवाद देता हूं। ये सिर्फ इफी इस गोवा की इस अद्भुत पावन धरती पर हो रहा एक मैजिकल धरती है। इस धरती पर मैंने बहुत शूटिंग की है, अनगिनत फिल्में की हैं। प्रियदर्शन जी यहाँ बैठे थे, हम उनसे बात कर रहे हैं, जीनत जी हैं, हमारे बहुत सारे डिग्निटरीज हैं यहाँ पर। A long history about my career. From drama school, I used to play Sita Maiya in Ram Leela. We have a Ramayana, as you must have heard. So I've started my career as an actor from there. तो वहाँ से लेके हमने I have finished 650 films, started my own long journey. But आज ये मुझे सम्मान इफी से मिला, बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच पर आके। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनकी वजह से मैं राजनीति में आया, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। Yes, because otherwise I was doing very well. बाबुल सुप्रियो जी, हम लोग we were neighbors. We were doing very well in our life, comfortable, enjoying, सब कुछ अच्छा चल रहा था, earning money. I used to shoot every day because I work in all the languages. So I used to be busy 365 days. In every movie and every day I used to go for shooting. And suddenly, leaving my career on peak and coming into politics was highly only inspired by Mr. Narendra Modi ji, our Prime Minister, our great Prime Minister. In 2014, and I said, yes, now this is the time to pay back. एक कहावत है कि लौटाना है प्रकृति को। आज मैं, क्या मेरा पूरा भारत गर्व महसूस कर रहा है। We produce our own vaccine. आज हमारी 2 वैक्सीन आ गई है, आत्मनिर्भर भारत है। आज देश, आज ये इफी फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड में कहीं फेस्टिवल नहीं हो रहा है, इस भारत में हो रहा है। वो सारी चीजें इस भारत में हो रही, जहां पर मेरे प्रधानमंत्री की सोच है, ईमानदारी है, एक त्याग है, एक सत्य है, राष्ट्र प्रेम है, और वही सच्चाई है। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे मेरे चीफ मिनिस्टर योगी महाराज भी वैसे मिले और मुझे एक पावन धरती गोरखपुर की मिली। तो सब कुछ मेरे मन का मिला और हम लोग इतने सुंदर भारत में इस वक्त हैं, इतने सुरक्षित भारत में हैं। एक बहुत बड़े भविष्य की ओर हम लोग जा रहे हैं और मैं आप सब लोगों को उस भविष्य के साथ बहुत सारी बधाइयां देता हूं कि हम लोग बहुत सुरक्षित हैं ऐसी सरकार में जहां पर हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं।
इफी की पूरी टीम को धन्यवाद, खरे साहब आपको और आपकी सारी टीम के ऑल द मेंबरान्स को सबनो दादा आपको प्रणाम दादा। आज आपने आज हमारा बंगाल बल्लभ दादा बहुत अच्छा लगा था आपसे। आपके इनके पुत्र भी हमारे बुम्बादा दोस्त हैं, दादा मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, तो हम लोगों का बहुत लंबा सब लोगों का साथ है। जैसे हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने कहा कि रवि मेरा मित्र है, ये उनका बड़प्पन है। हम सब लोग को देखते हैं, हम आप लोगों को देखते हैं। जैसे कि बाबुल दादा ने कहा कि इस बेटर कि दिल से बोले, हम सब कलाकार हैं, हम लोग दिल से बोलते हैं। और ये मौका प्रधानमंत्री जी ने दिया कि हम कलाकारों को कहां से कहां पहुंचा दिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, हम लोगों को लॉ मेकर के उस मंदिर में पहुंचा दिया। आज मैं 650 फिल्म करके इफी के इस मंच पे आज मुझे जो सम्मान मिला है, मैं ये सम्मान पाके बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं कि इतने साल की मेरी तपस्या, इतने साल की मेरी मेहनत को आज इतने बड़े भारत सरकार के मंच पर नवाजा गया। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। Congratulations and thank you. देवियों और सज्जनों, आज हमारे बीच वो अदाकारा हैं जिन्होंने अपने ग्रेस और बेहतरीन अदायगी से इंडियन सिनेमा की शान बढ़ाई। वो हैं इंडिया की टाइमलेस ब्यूटी। हरे रामा हरे कृष्णा से डेब्यू करते ही वो रातों रात बन गई देश की धड़कन। मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली इंडियन। Ladies and gentlemen, it is an absolute honor and a delight to introduce you to our guest of honor for the closing ceremony of the 51st edition of IFFI, the evergreen and ever gorgeous and ever inspiring Zeenat Aman. May I please request Dr. Pramod Sawant, Chief Minister Goa, Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Shri Babul Supriyo, Shri Amit Khare, the Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, to felicitate our guest of honor, Zeenat Aman, for her incredible and unparalleled contribution to Indian cinema. Please welcome Ms. Aman. Ma'am, may I request you to please speak a few words to the audience? Thank you, gentlemen and dignitaries. Namaskar and a very good evening. It's so wonderful to be here at the 51st edition of IFFI. Really, we've had some amazing speakers, and I would like to acknowledge the presence of our Honorable Governor of Goa, Shri Bhagat Singh Koshyar, the Honorable Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawant, the Honorable Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Shri Babul Supriyo, the Secretary Minister of Information and Broadcasting, Government of India, Shri Amit Khare, Festival Director, Shri Chaitanya Prasad, my dear, dear audiences, and of course the media. I want to thank
the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, for inviting me to this closing ceremony of IFFI. Celebrating its 51st edition, IFFI continues to honor contemporary filmmakers for their outstanding work in cinema and truly leaves a global footprint in the beautiful sandy city of Goa. Honestly, I'm not so talented like Babul Supriyo sir to give an extempore speech and just refer to points. I'm truly just going to read what has been written. Due to the pandemic, the film industry needed resilience, as many of the speakers ahead of me have said, and IFFI is one such institution which could effectively provide it at the right place and at the right time. As we journey towards the post-pandemic world, a glimpse of it can be felt today with this excellent gathering of film lovers. I am certain that all the international and Indian films selected under IFFI and the ones who will be awarded today are backed with immense hope for a world with better understanding towards multiple issues, cultures, societies, or simply an individual unit of it all. I congratulate and thank all the filmmakers for entertaining and educating the audiences through their unique and charming narrative. As many speakers ahead of me have said, cinema has the ability to reach the hearts of its audiences and perform its magic in the real world. IFFI is one such place where the magic of cinema unfolds and remains in each successful edition. Every edition adds to the knowledge of the festival and enhances its reach globally. I wish IFFI a very eventful future filled with delegates and audiences who together create and enjoy the beauty of cinema. I once again thank the Government of India for inviting me to this ceremony and for honoring me with such wonderful words. It really is very special to be here amongst everybody present. And I wish all of you a great year ahead. Jai Hind. Congratulations, Vishuda. Really. Thank you. Thank you so much, Ms. Zeenat Aman. You have been and remain an inspiring and truly incredible presence in Indian cinema. Thank you. I need somebody to just hold. Ladies and gentlemen, now it's time to give it all up for our technical partners who've been the spine of this entire event and played a major role in the seamless execution of the 51st edition of IFFI. Before that, may we take a moment and have a rousing round of applause for Ms. Aman as she exits the stage, please. She is a treasure and an icon. And now, moving on to felicitating our technical partners, may I call upon stage Mr. Shaji N. Karun, Ravi Kotarakara, Manju Bora, A.K. Beer and Rahul Ravel to felicitate our technical partners, please. For being here, I would now like to invite on stage Mayur Sethi, Chief Engineer, Cube Cinema.
forward, ladies and gentlemen. These are the people who make events such as these possible. All of the hard work that goes into creating IFFI. And now please welcome Abhinav Johri, Chief Engineer plus Electronics. Thank you to our technical partners, and this is Abhinav Johri. Thank you very much, sir. Now please welcome Ujjwal Nirgudkar, Vice President, SMPTE. Thank you to our technical partners. They have made this possible. Thank you, Shri Ujjwal Nirgudkar. May I now request Chief Minister Dr. Pramod Sawant and Vice Chairman ESG Shri Subhash Phaldesai to please come on stage and felicitate creative art directors for the venue and city decor for the 51st IFFI, Siddhesh Desai and Sanman Kekre. Thank you, ladies and gentlemen, for presenting the felicitations. You may please return to your seats. Thank you for joining us on stage and doing the felicitations. IFFI's promise is to commemorate the finest cinematic works from across the globe. But this wouldn't be possible without our accomplished jury members. The pandemic hasn't taken away the spirits of our participants, audience, and also of our jury members, who were very thrilled to be a part of the IFFI jury. Although not here physically, they have shared a special message for all cinema lovers. Can we have the video, please? Thank you, dignitaries, and thank you to all of those who have made IFFI possible through the years and particularly this year. And now it's time to hear from our jury, who are not here physically, but we do have an AV from them. Government of the Republic of India, Minister of Information and Broadcasting Mr. Prakash Javadekar, Chief Minister of Goa Mr. Pramod Sawant, Festival Director Mr. Chaitanya Prasad, Honorable members of the official jury, dear International Film Festival of India staff and public. On behalf of the official jury, made up of Mr. Priya Darshan, Ms. Rubayat Hossain, Mr. Prasanna Vidnesh, Mr. Abu Bakar Shauki, and myself, I want to thank the opportunity that we have been given to evaluate the films in competition. We are very happy with the wide and varied themes selected by International Film Festival of India for this competition, especially those that make us reflect on individual freedoms, the rights of children, and all the people of this world, the empowerment of women, and the memory of many things that some humans have done that we are sure we never want to happen again. Thank you, International Film Festival of India, for this selection of works rich in content and in aesthetic search. Hello everyone at the International Film Festival of India. I am Abu Bakr Shauki. I was one of the jury members in this year's edition.
Unfortunately, I was not able to be there with you in the beautiful city of Goa this year, but I wanted to take this chance to thank everyone for picking this wonderful jury and also for giving us the chance to watch 22 amazing films that we really enjoyed over the past week. Thank you for everyone, and I wish you good luck with all the future editions. Namaskaram. Oh, I'm missing Goan fish curry and Fanny. I envy you because you challenged COVID-19 and came all the way to watch movies, enjoying the Goan food. Big thank you for you. I don't think cinema will not survive if we don't have die-hard fans like you. And I would like to thank the organizers for giving us opportunity to watch 22 films within the span of 7 days. It was hectic, but I think the time we spent, we all appreciate the challenges that these filmmakers have taken. So let's challenge COVID-19 and the world we live in and make good films. Thank you. All the best to you. Every year, a group of experts comes together from different parts of the world to form the International Jury of IFFI. And they take this very serious responsibility for judging films across categories. These 8 days have been a creative roller coaster, where brilliance of cinema from all over the world was showcased on a single platform, a screen which hundreds and thousands of people share together to watch, to appreciate, and to critique an art form, to be motivated to turn an idea into a great cinematic perspective. And here we are today at the closing ceremony. It is now time to announce and felicitate winning cinema across the categories. And joining us from IFFI's International Jury Panel, we have ace filmmaker Mr. Priyadarshan with us today. Sir, may I request you to join us on stage to announce the 51st edition of IFFI winners. Hello. Hi. With pleasure. Respected dignitaries of and on the dais, whatever I wanted to say is already spoken by everybody. Nothing new to say because of that. And that's the truth. But I take this opportunity only to say one thing, that I really appreciate the Government of India and Government of Goa for taking such a bold step and carrying the show forward. It's not only an inspiration for the entertainment field, this is the attitude we have to take all through in all sections of the society and social movement so that we take India forward. Thank you, and I'm just getting into my job of announcing the winners, starting with award for the best debut director. The name of the film is Valentina, and the film the director is Casio Pereiro dos Santos. It's a Brazilian film. Can we have the AV, please? Valentina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que a sua família veio pra cá? Na verdade, veio eu e minha mãe. Claro, posso tratar, Dona Vânia. Essas coisas que eu encontro na minha frente. Algum problema, Valentina? Ainda não. Eu queria contar uma coisa pra vocês. Eu não nasci menina.
Congratulations. The winner from Brazil, congratulations to you, sir. He is awarded a silver peacock, a certificate, please remain center stage. A certificate and a cash prize of rupees 15 lakhs. Thank you so much. There's nobody there. Yeah. I'd like to invite on stage to present this award Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, please. Congratulations. Congratulations. And how lovely that you came. How wonderful to see you here. Priyadarshan, sir, I believe we have a special mention. Yes, that is actually, I have to say that there were so many good films and it was very difficult for the jury to really choose what the best out of that. So it was a request from the rest of the jury saying that we have to have a special mention because the film deserves, this particular film deserves a lot. So the special mention award goes to Bridge, the film. Directed by Kripal Kalita. Congratulations for the special mention to Bridge. Can we have the AV, please? Congratulations to Bridge. And to present this award, may I invite Honorable Chief Secretary Goa, Shri Parimal Rai, to please come on stage. And please welcome the director, Kripal Kalita from India. He receives a certificate. Congratulations to Shri Kalita. And thank you so much, Shri Parimal Rai. Moving ahead, our next award is for Best Debut Director. No, we have already. We did the debut director. We have already done the debut. Okay. So we move ahead now to the Special Jury Award. The Special Jury Award goes to the film February, and the director is Carmen Calais.
It's difficult to sometimes pronounce it properly. It's Kamen Kalev. Kamen Kalev. And? That's it. Okay. Can we have the winner's AV, please? It's on there? Congratulations to the winners from Bulgaria. A silver peacock, a certificate and a cash prize of rupees 15 lakhs is presented to the winners. Yes? Moving on to our next award. This is for Best Actor Female. And Priyadarshan sir, I'd like to request you to announce this winner. That is it. So, the best actress, the best actor female is Sophia Trefis for the film I Never Cry. Congratulations, and let's have the AV, please. Potrzebuję hajsu na egzamin. Skąd ci wezmę? Tata poproś. Siema. O, niezły jest. Ile ty masz lat? 18. Niedługo. To wróć, jak będziesz pełnoletnia. Ale ja nie do pracy, ja w sprawie ojca. A w ogóle co u niego? Nie wiem. Mam taki układ, że ja nie wiem co u niego, on nie wie. Witamy w Irlandii. Congratulations to Zofia from Poland. This award carries a silver peacock, a certificate and a cash prize of 10 lakhs. And now it's time to announce the award for Best Actor Male. The best actor male goes to the film Silent Forest. The actor is Sushan Leo. Can we have the AV, please?我们要小心处理。是吗？我不会放着不管的。 Many congratulations for winning the award. The winner is presented with a silver peacock, a certificate and a cash prize of rupees 10 lakhs. Now let's move ahead to our next award. This one is for the captain of the ship. You know it well. Yes. Ladies and gentlemen, presenting the award for Best Director. The best director award goes to the director of the film Silent Forest, Koshan Yuan. Congratulations to Silent Forest. That's 2 in a row. Can we have the AV, please? 教育是一门关于的职业。你们不是在玩吗？啊！你这做老师的，搁干做伙咧乱。他们叫我不可以说出去，有一次差一点。 Congratulations to the Silent Forest for winning in both categories, Best Actor and Director. The Best Director award comes with a silver peacock, a certificate and a cash prize of rupees 15 lakhs. Congratulations. Moving ahead to our next award, this is the last award for this segment, the renowned and much coveted Golden Peacock Award. Ladies and gentlemen, presenting the award for Best Film.
The Best Film Award goes to Into the Darkness. So, director is Anders Rayfan, and the producer is Len Bogart. Congratulations. Can we have the AV, please, for Best Film? Congratulations to Into the Darkness. Thank you so much, sir. The prestigious Best Film Award carries also the prestigious Golden Peacock, a certificate and a cash prize of rupees 40 lakhs. Thank you so much, Priyadarshan sir, for doing the honors. I would now like to request ICFT representative Mr. Manoj Kadam to join us on stage to present the next set of awards. Yes, please go ahead. Shall I declare the award? Please continue, yes. Yes. It's the ICFT UNESCO Gandhi Medal goes to 200 meters by Amin Nayaf. Congratulations, and can we have the winner AV, please? أنا بالطريق قطعت الحاجز من شوي. كيف راح ابنك على المستشفى هيك بدونك؟ هو عايش مع أمه بال 48. مصطفى قال لي مش مواجهة لأنك أنت بتعرف كثير منيح إنه الحق عليك أنت. لما كان عندك فرصة إنك تطلع هوية إسرائيلية رفضت وتنحت. بتنزل لهوني. تصبح على خير. هو خلاص بكفي. Hello. Hello. Are you from Germany? Yes, from Berlin. Congratulations to 200 meters. Unfortunately, the winner is unable to join us physically, but we do have a very special message from them. Can we play the speech, please? Hello, my name is Amin Naife, the writer and the director of 200 meters. I want to thank the International Film Festival of India for selecting my film. I also would like to thank the audience and the city of Goa and also the ICTF for this amazing award. I'm very grateful and thankful that my film is being recognized with a Human Rights Award because it talks about human rights. I also wish that nobody ever would have to live a forced separation, and that this pandemic would also go away so that we can reunite with our families and loved ones whenever we want. Thank you and all the best. Congratulations to 200 meters and Amin Naif. And thank you so much, sir. Manoj sir, may I request you to say a few words? Yeah. Thank you. Greetings from the CICT, ICFT, UNESCO Paris. On behalf of the CICT, ICFT Executive Office and the Director General of ICFT, George Duponot, we wish to convey our warm congratulations to the Ministry of Information and Broadcasting, to DFF, to the ESG, the Entertainment Society of Goa, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant,
Mr. Amit Khaire, Secretary, MIB Government of India, Sri Chaitanya Prasad, Festival Director, Prashant Kumar, the Deputy Director, Tanu Rai, the Deputy Director, and to the IFFI executives and to the team who, as every year, tirelessly and successfully organized the physical and hybrid form of the 51st session of festival during this global pandemic, while most of the international festivals have been cancelled. ICFT highly appreciate the rich program and IFFI's continuing efforts meeting the cultural identity, diversity and dialogue. IFFI should be considered as a reference not only for the film sector but also as a driving force in promoting mutual understanding and peace. ICFT is honored and proud to be the part of the festival and is looking forward to continued and fruitful collaboration. Thank you very much. Thank you, sir. IFFI's promise is to celebrate the finest cinematic works from across the globe. Ladies and gentlemen, our 51st edition of IFFI will be closed by director Kiyoshi Kurosawa's historical drama, Wife of a Spy. This Japanese film, which bagged the Silver Lion for Best Director at Venice International Film Festival, is having its India premiere. Can we have the trailer, please? Akumaのような所業を僕は見た。仲居をしていた日下部弘子が殺されました。ご存知ですか、この女。私を疑ってらっしゃる。日下部弘子を満州から連れ帰ったのは優作さんです。あなたとあなたのご亭主がこれからどう振る舞われるか、我々はそれを注視しています。あなたがスパイなら私はスパイの妻になります。おじさん以外の誰にも渡してはいけない。この証拠を国際政治の場で発表する。本当のことをおっしゃってください。僕はスパイじゃない。信じるのか信じないのか。あなたを変えたのはあの女です。決定的な証拠だ。あなたは何も見なかった。あなたには分かりようがない。ひとえにあなたのことが心配なんです。泰治君は君に惚れている。やはり知らなければ何も信じることはできません。あなたは連合国側のスパイですか。誰が通報した。あなたもよくご存知の方だ。アメリカへ渡りましょう。私たち2人で捕まることも死ぬことも怖くはありません。私が怖いのはあなたと離れることです。Ladies and gentlemen, that was the trailer for Wife of a Spy. As the director Kiyoshi Kurosawa could not be present with us today, he has sent us a video saying a few words. Let's take a look at the AV, please. ご覧の皆さん、こんばんは。黒沢です。本日はクロージング作品にスパイの妻が選ばれたということで、大変光栄に思っています。上映にお越しいただき本当にありがとうございました。5話は実は僕はもう6年か7年ぐらい前ですかね、一度行ったことがありまして、あれはもう本当に素晴らしい思い出ですね。美しい海、美しい街、優しい人々で、なんといっても美味しい食べ物ですね。何から何まで今思い出してもなんか夢のような日々を過ごしたなと思っております。ですから本当はもうすぐにでもそちらに駆けつけて皆さんと直接お会いしたかったです。でも残念ながら今はそれができません。日本にいてこうやってリモートでご挨拶することしかできないんですけれども、ただ映画そのものは海を越えてそちらに無事届いていると思いますので、僕が何か喋るよりも作品がずっと雄弁に何かを物語ってくれると思っております。スパイの妻という映画は
40年の日本を舞台にして、時代に翻弄される夫婦の姿を描いた作品です。皆さん、最後まで、ごゆっくりご鑑賞ください。本日はどうもありがとうございました。Ladies and gentlemen, that was director Kiyoshi Kurosawa of the closing film of IFFI this year, Wife of a Spy. And now, ladies and gentlemen, अब इस मंच पर आ रही हैं एक ऐसी कलाकार जिनकी आवाज ने पिछले कुछ वक्त से सबको सम्मोहित कर लिया है। कई सारे ब्लॉकबस्टर गानों को अपने आवाज से सजाने वाली लेडीज एंड जेंटलमैन असीस कौर आ रही हैं मंच पर इफी के 51st एडिशन को संगीतमय करने। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सुप्रीमली टैलेंटेड असीस कौर के लिए। छूटे मुझसे रंग तेरा डोलना एक तेरे बाजों दूजा मेरा कोई मोलना बोलना माही बोलना बोलना माही बोलना तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना तुझ में ही रहना मैं तुझ में ही खोना दिल में बिठा के तुझे दिल नहीं खोलना मर के भी माही तो से मुंह न मोड़ना बोलना माही बोलना बोलना माही बोलना बोलना माही बोलना न मारेगी दीवानगी मेरी न मारेगी आवारगी मेरी कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी
छड्डियो ना के तेरे बिन दिल नहीं ओ लगना जिथे भी तू चलना माही मैं तेरे पिछे पिछे चलना तू जी सकदा नहीं मैं जी सकदी नहीं कोई दूसरी भी शर्ता मैं रखदी नहीं क्या तेरे बाजों मेरा रंग तेरा चढ़िया दे होर को रंग नहीं हो चढ़ना जिथे भी तू चलना माही मैंने पिछे पिछे चलना ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही Well, that was just magical. इस खूबसूरत शाम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए देवियों और सज्जनों एक बार फिर असीस कौर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं श्री अमित खरे, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निवेदन करूंगी कि वो कृपया मंच पर आएं और असीस कौर को इफी की तरफ से सम्मानित करें। Ms. Assis Kaur, may we have you on stage as well? Thank you, sir, and thank you so much, Assis. That was just magical. What an absolutely wonderful performance. Ladies and gentlemen, I think that deserves a hearty applause. Thank you, Assis. And now, ladies and gentlemen, to conclude our 51st IFFI closing ceremony, I'd like to welcome on stage the man who's been our guide and our anchor through it all. When everyone had their very reasonable doubts about the festival, he stepped up and took the plunge, not only creating the 51st edition of IFFI, but envisaging a hybrid event as well. I take this opportunity to invite the Additional Director General Festival, Director of IFFI, Mr. Chaitanya Prasad, to say a few words. Ladies and gentlemen, a round of applause. This is the person responsible for this hybrid version of IFFI this year. Good evening, Namaskar. Honorable Governor of Goa and Maharashtra, Bhagat Singh Koshyari ji, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant sir, Honorable Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Babul Supriyo sir, Honorable Member of Parliament, Ravi Kishan sir, Secretary Information and Broadcasting, Amit Khare sir, Chief Secretary Goa, Parimal Rai sir, Chairman and members of the international jury, Chairman and members of the Indian Panorama for Feature and Non-Feature, Honorable members of the Steering Committee, without whom we would not have been here today. Chairman and members of the Technical Committee who put their minds together to give us the technical infrastructure to establish IFFI. Preview Committee members, people who sat through to see the movies that are showcased at the 51st edition, our technical partners, Entertainment Society of Goa, the full team. Without them, we would not have succeeded on ground zero. The films wing of the Ministry of Information and Broadcasting, our colleagues there, media units of the INB Ministry, without whom we would not have done the outreach. Press Information Bureau, Doordarshan News, All India Radio, Photo Division, New Media Wing, NFDC, and other media units who were involved in this. And last but not the least, my hard-working colleagues at the Directorate of Film Festivals. Ladies and gentlemen,
I feel very humble today, tonight. We began a journey a couple of months ago with a sense of apprehension as to whether we would be able to do IFFI in the light of the pandemic. We were not very sure, but today I stand in front of you to duly acknowledge the captain of my ship, Mr. Prakash Javadekar, the gentleman who always believed in our abilities to do things the way he envisaged. Ladies and gentlemen, a round of applause for him, please. Whenever we had our meetings, Honorable Minister said, yes, we can. Tayari karo, dekhenge kya hota hai. So that is the spirit with which we move forward. I would be failing in my duties and responsibilities if I do not thank the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, sir. Sir, you were the Rock of Gibraltar at Goa. You kept us going. Whenever we had the steering committee meetings, you always said, मैं तैयार हूं, आप जब करना चाहें करें. That was a kind of an enthusiasm you gave us. I remember 2 meetings, sir. You always said, हम तैयार हैं. And we were wondering, how is sir saying this? I used to talk to the CEO, ESG. He said, नहीं, Chief Minister ने कहा है, हमको करना है. So that was the spirit with which we started. My 2 key principles, ladies and gentlemen. My secretary, Mr. Amit Khare, and the Chief Secretary of Goa, Mr. Parimal Rai. A warm of applause for them, please. They were the ground level managers, if I may be permitted to say, sir, who kept the policy flowing, who kept the hiccups out of the way, who gave us the profile, the depth, the intensity to take the program forward. It was an unbelievable run because we decided to do something on the hybrid mode. A hybrid mode which was happening for the first time as far as the Ministry of I&B is concerned. We were doing a virtual segment, we were doing a physical segment, combining the two which no other festival in the world has done. People were backtracking, festivals were closing down. When we said if he will be postponed, Honorable Minister said, kabhi nahi postpone karenge. But when it was postponed for the first time in the traditional line of 20th to 28th of November, both Honorable Chief Minister and my Minister, Prakash sir, said, 16 to 24 January is our date. Tayari karo. So that is the spirit with which we move forward, ladies and gentlemen. And I think, thanks to everyone's blessings, I stand in front of you today at the verge of the closure of the 51st edition of the International Film Festival of India. We are truly honored, ladies and gentlemen, by the presence of Babul Supriyo sir. Sir, you were here last year. If I remember correctly, you did sing a song. This time, we failed in our duties to ask you to sing a song. Perhaps better next time, sir. Thank you very much for being here. Ravi Kishan, sir, we didn't know, I personally didn't know you had acted in 650 movies. So when you told me last night, we said 650 movies across the length and breadth of this country. This is an unbelievable record. Thank you very much for being here, sir. And we hope that next year you come, not next year, I think November. November, as luck would have it, 20th to 28th of November is what we have. I am truly honored. I'll take 1 or 2 minutes because there are so many people to thank. So please bear with me. When Honorable Minister announced the name of Biswajit ji, it was Mere Sanam which clocked in our mind, the instant reaction. And then Minister said, तुम लोग कैसे आदमी हो, तुमको गाना ही नहीं याद. I said, sir, what happened? He said, तुम 20 साल बाद क्यों भूल गए? So that is the spirit with which he came in. And sir, we are truly honored. Yesterday we spoke at length with you, and the memories were jogging up and down. It was very difficult to choose the songs which we wanted to play. But thank you very much, sir. The IFFI platform is truly honored to have you with us. And our mind just jogs back to the 60s and 70s. As far as Madam Zeenat Aman is concerned, when we got news that she was coming, it was just dam maro dam. And the first question she asked us, how old were you? So we just said, yes, we remember those glasses and that garland round your neck when you sang Hare Krishna, Hare Ram, Dam Maro Dam. That was the kind of enthusiasm. And ladies and gentlemen, you were kind enough today to give her that kind of a response. Coming down to the profile of the festival, seniors have spoken
before me. They have acknowledged that it would not be appropriate for me to say anything further. It would just be a repetition. But before we close curtains, there are people and there are segments with whom we would like to thank. The Entertainment Society of Goa, the Vice Chairman, and my dear friend, younger brother Amit Satija. He has been absolutely outstanding. We have collaborated with each other 24/7. And sir, with your permission, Parmal Rai sir, we will miss him. At least I will miss him. Amit has been absolutely wonderful in taking the battle forward as far as IFFI is concerned. And thank you very much, Amit, for taking us forward. The entire ESG team, I mean, Vice Chairman, Mrinal, and everybody else. I can't name everybody individually. Talking about media units, yes, each and every media unit of the Information and Broadcasting Ministry, led by Manish Desai, and also my boss in Delhi, Mayank Agarwal, who made sure that the coverage and publicity went dot on zero. I mean, on the bullseye, if I can say so. And a certain special section whom we should thank, must acknowledge, my seniors, esteemed filmmakers from the steering committee. Sir, thank you very much for guiding us. You held our index finger and we crossed the bridge. Today we feel very proud and we acknowledge your presence, your guidance and your vision, and hopefully on the 52nd edition we will certainly take this whole process forward. We hope that you continue to guide us. We have created a new format. My only humble request to you is that when you meet your colleagues across the length and breadth of this country, or you meet your colleagues internationally at international festivals, kindly tell them that yes, we can. This is a country, a resurgent India, a vibrant India. We do not go to the red carpets anymore. The red carpets comes to India. So we have so many international festivals coming. Kindly help us in spreading the message of our perfection as far as organizing festivals in this country is concerned. And finally, if I have missed anyone, I'm sorry. But one final word for my colleagues in the Directorate of Film Festival. Ladies and gentlemen, a small team, a dedicated team, which has worked day and night, which has had to live up the tensions and pressures of the pandemic, which has had to live up to expectations, which has had to live up to the idea of holding a hybrid festival. Believe me, when we decided on a hybrid festival before I end, we had no clue of what a hybrid festival, how to organize it. Then we got the nuts and bolts together, and today we are extremely proud that we did a festival unique and the only kind as far as the international circuit is concerned. And finally, on my own behalf, I can say I feel very relieved. We worked towards a goal. We wanted to create excellence of cinema. We wanted to create a content which would be unmatched. And the cinema which came to Goa, which we showcased, the world has appreciated it. The media has appreciated it. The online buzz of IFFI 51 is there. Thank you very much, ladies and gentlemen. Hope to see you in November from the 20th to the 28th. What is the format, how we will go, we will depend on our peers to guide us. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, Mr. Chaitanya Prasad, and congratulations on pulling off this edition so successfully. And now, ladies and gentlemen, as they say, we bring down the curtain of the 51st edition of the Indian Film Festival of India. I would like to thank our organizers who made 51st IFFI a historical event for all cinema lovers. Thank you everyone for your presence here to make this such an illustrious event. Thank you, ladies and gentlemen. Please continue to have a marvelous day. It's bye-bye from me. तो चलिए इसके साथ ही महोत्सव निदेशक श्री चैतन्य प्रसाद के भावुक धन्यवाद भाषण के साथ भारत का 51वां IFFI यहां समाप्त हुआ। कोरोना के कारण इस बार निश्चय ही दर्शकों की गणना कम रही, लेकिन स्वर्ण मयूर, रजत मयूर जैसे पुरस्कारों की महत्ता इससे कतई कम नहीं होती, जिनकी अभी-अभी यहां पर उद्घोषणा हुई। महोत्सव तो खत्म हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। Yes, Ruchika, and this has been a spectacular ending
to the IFFI 51, and we look forward to 52. All good things must come to an end, but the show must go on. We have the closing film, Wife of a Spy, a Japanese film directed by Kiyoshi Kurosawa, which won the Silver Lion for Best Director at the Venice International Film Festival, which will be screened for the delegates as the final parting gift. The show will go on and cinema will live. We did it. Thank you so much, Ruchika. It was a pleasure. जी बिल्कुल क्या जी, और एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा इस नए हाइब्रिड फेस्टिवल का। और मुलाकात होगी हमारे दर्शकों से 52वें संस्करण में इफी के, लेकिन तब तक इसी तरह से फिल्मों के जलवे सजते रहेंगे और इसी तरह से आशा करती हूं कि एक बार फिर अपने पूरे रंग में इफी वापस आएगा नवंबर में। गुड बाय एंड गुड नाइट। शुक्रिया। तो ये सीधी तस्वीरें आप गोवा से देख रहे थे, जहां पे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वें जो संस्करण था उसका समापन समारोह की सीधी तस्वीरें थी। आपने देखा किस प्रकार से रंगारंग कार्यक्रम के साथ में इसका एक तरीके से समापन हुआ है। अपने आप में भारतीय फिल्मों के साथ साथ क्षेत्रीय फिल्में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो फिल्में हैं उन सब का यहाँ पे प्रदर्शन हुआ। तमाम दुनिया भर के लोग आए और ये पहली बार ऐसा था कि जब हाइब्रिड मोड में इसको आयोजित किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। आज जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र कर रहे हैं, हम इस स्थिति में हैं कि हम भारत की एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं, तो यकीन मानिए इसकी बुनियाद में न जाने कितने, या यूं कह सकते हैं अनगिनत शूरवीरों, स्वतंत्रता सेनानियों का लहू शामिल है, जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया, जिनके विचारों ने या जिनके विचारों की वजह से देश की सांस्कृतिक श्रेष्ठता अपने आप में सिद्ध हुई है। और ऐसे ही कई शूरवीरों में एक नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है, जिसके नाम लेते ही हमारे और आपके बदन में सिहरन सी दौड़ जाती है, और वो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स्वातंत्र वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपने जो मुझको पूर्वी एशिया की जंग आजादी के नेता बनाया, इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अब ये वक्त निहायत नाजुक है। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, लेकिन निहायत नम्रता के साथ, और खुदा से दुआ मांगता हूं कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें, जिससे हम अपने हमवतनों की पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़ें और हिंदुस्तान को आज़ादी पहुंचाएं। ये आवाज ही तो थी, यही वो आवाज